Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we are going to discuss topic exploring data from 5th unit data literacy. Exploring data is about getting to know the data. Means we have to study the data set, we have to check what type of data, what values are there in our data set, whether they are typical values are mean values. जो mean या average वाली values होती है those are known as typical values and these values are used for comparing larger data set. So ये mean या average values को हम typical values कहते हैं and these are used for comparing or analyzing large data set. Next is unusual values. Unusual values means which are very far from other data points. For example, there is a data set जिसमें कि height of persons are there. सो लेट्स से कि 5, 6 ये सारी हाइट है और अगर उसमें 1 या 10 इस तरीके की हाइट है दैन इट इज़ अनयूजुअल वैल्यूज़. सो द वैल्यूज़ विच आर वेरी फार फ्रॉम द normal data points or other data points in the distribution. Next is spread out. Spread out values are those values which are very far from the mean. So mean value से अगर values far है then they are called spread out values. Next is or whether they are extreme. So extremes values are those values which are minimum or maximum values from the data set. For example, a data set contains marks और marks जो है वो 3 to 10 है. So यहाँ पे बीच में और marks भी हैं. So 3 and 10 will be the extremes of this data set. More importantly, during the process of exploration, one gets an opportunity to identify and correct any problems in the data that would affect the conclusions drawn in any way during analysis. So exploring data is very important step, and in this step we can know that what type of data we are having in the data set, and in case if there is any problem in the data ड्यूरिंग स्टडिंग दैट डेटा इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम जो है इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट लाइक अगर डेटा पॉइंट्स बहुत एक्सट्रीम्स हैं या स्प्रेड आउट है और हमें लगता है कि इट इज़ गोइंग टू कॉज द प्रॉब्लम फॉर आर एनालिसिस फॉर आर इनसाइट्स जो भी प्रिडिक्शन करेगा मॉडल में. इफ़ वी थिंक कि ये जो डेटा सेट है इसमें दिस इज़ नॉट प्रॉपर, दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर आर मॉडल, देन वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम ड्यूरिंग एक्सप्लोरिंग द डेटा. Next is levels of measurement. So the way a set of data is measured is called level of measurement. So we know that there are different types of data set, may be qualitative, may be quantitative, means numerical भी हो सकता है, descriptive data भी हो सकता है. So how we are going to measure that? It is called level of measurement. Not all data can be treated equally. It makes sense to classify data set based on different criteria. So based on different conditions we can make the group of data sets. Some are quantitative, some are qualitative. So you can see there are two types of level of measurement. One is quantitative and another is qualitative. Quantitative data means numerical data. For example, earning of a person will be quantitative data. अगर आप earning of person को देखोगे तो it can be represented as a number. Next is qualitative. Qualitative is related to category, means what type of थिंग दैट डेटा इज़ हैविंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहे हैं अर्निंग ऑफ अ पर्सन इज़ अ क्वान्टिटेटिव डेटा, सो क्वालिटेटिव डेटा विल बी लाइक ऑक्यूपेशन ऑफ दैट पर्सन, मीन्स व्हाट टाइप ऑफ जॉब ही इज़ डूइंग, दैट इज़ क्वालिटेटिव डेटा, एंड what amount of earning he is having, that is quantitative data. Next is some data sets are continuous and some are discrete. So continuous data set can take any value. ऐसा data set जिसमें कि कुछ टाइप की भी values आप store कर सकते हो. For example, fractional values, integer values, these will be continuous data set. For example, temperature. So temperature can be like any temperature पे कोई भी value हो सकती है, and it can be in integer, it can be whole numbers, it can be point, means fractional values, and some are discrete. Discrete are those values which can take only certain values, means a discrete data set ऐसा data set होता है जिसमें आप कुछ ही type की values store कर सकते हैं. इसमें आप mostly whole numbers या integer type की values ही store करते हैं. And example will be like number of students in a class. So number of students in a class will be discrete data type, or number of students or number of persons who like maths or who likes AI.
तो ऑब्वियसली इट विल बी अ होल नंबर. तो ये टाइप किस टाइप का डेटा सेट है? इट इज़ अ डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा सेट, and temperature, height, such data sets will be continuous data set. So you can see that quantitative may two categories are there. One is discrete and another is continuous. Next, qualitative data can be nominal or ordinal. This we are going to discuss after this paragraph, that what are nominal and what are ordinal. So just for now you can remember ki qualitative data is of two types, two levels are there, nominal and ordinal. However, in quantitative data we can split it into two groups, interval and ratio. So these interval and ratio level of measurement is for quantitative data, and nominal and ordinal are for qualitative data. So why this level of measurement is very important in this AI? Obviously we know that AI is data driven, so we have to summarize the data, we have to present the data, and what type of calculation will be performed on it, how we are going to measure the data, how we are going to analyze the data, which type of statistical analysis should be performed on the data for summarizing it, that will be determined by the level of measurement. So as we have already discussed, there are four types: nominal, ordinal, interval and ratio. Now we are going to discuss all these four levels of measurement in detail. So first level is nominal level. Nominal variables are like categories such as Mercedes, BMW or Audi, means car type, किस टाइप की कार है, उसका मॉडल, that is nominal level. Or maybe the categories of seasons, winter, spring, summer and autumn. They aren't numbers, means ये कोई नंबर नहीं है जिसमें कैलकुलेशन हो सके, सिर्फ these are the types of seasons and cannot be used in calculation neither in any order or rank. तो इनको हम किसी रैंक में रखना भी ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मंथ्स की, नेम ऑफ मंथ्स की, तो उसमें एक बार को हमें क्या करना होगा, नेम ऑफ मंथ्स को हम फिर भी क्या करते हैं, ऑर्डर में रखते हैं. बट हेयर like categories of these cars or seasons, there is no need of putting them in order or rank. So such type of data set is nominal level. The nominal level of measurement is the simplest or lowest of the four ways to categorize data. So ऐसा डेटा जिसमें हमें सिर्फ कैटेगराइज करने की ज़रूरत है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल लेवल. नॉमिनल मीन्स इन नेम ओनली, जिसमें हमें बस उसका नेम करना है. For example, color of eyes, yes or no responses to a survey, gender, smartphone companies, all deals with nominal level of measurement. Even some things with numbers associated with them, such as numbers on the back of a cricketer's t-shirt, are nominal, since they are just used as name for individual players on the field and not for any calculation purpose. So these t-shirt numbers, their jersey numbers are just for their names. No calculation, no ordering is required, so they are considered as nominal level. Another example can be roll number of students. So roll number are also just given numbers to them, so that हमें नेम याद रखने की ना ज़रूरत पड़े, वी कैन जस्ट कॉल आउट देयर रोल नंबर्स. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल लेवल. ऑर्डिनल डेटा इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप्स एंड कैटेगरीज विच फॉलो अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर. सो ऐसी चीज़ें, ऐसा डेटा जिसमें ऑर्डरिंग की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड टू रेट अ मील at a restaurant and the options are unpalatable, unappetizing, just okay, tasty and delicious. Although the restaurant has used words, not numbers, to rate its food, it is clear that these preferences are ordered from negative to positive or low to high. Thus the data is qualitative ordinal. So here this example is given where it is asked whether you are going to recommend this restaurant or not to your friend. So obviously it is in ordering. You can't write these numbers without any order. So if you are marking this 7, so it is highest in order. So such data means इसमें calculation तो perform नहीं हो सकती, but ordering is required. So such data is ordinal level. However, the difference between the data cannot be measured. Like the nominal scale data, ordinal scale data cannot be used in calculation.
So in same way, मतलब nominal and ordinal both are almost similar, both are not used for calculation, both are qualitative data, but the difference is कि nominal में no ordering is required, but ordinal data requires ranking or some order. Now the another example, that a hotel industry survey where the responses to questions about the hotels are accepted as excellent, good, satisfactory, and unsatisfactory. These responses are ordered or ranked from the excellent services to satisfactory response to the least desired or unsatisfactory. Again, these are also just not names, they are also require some ordering, but the difference between two pieces of data as seen in previous case cannot be measured. Means we don't know कि good और satisfactory में actual में क्या difference है. For example, अगर हम बोले कि किसी के 10 मार्क्स आए हैं और किसी के 20 मार्क्स आए हैं, तो हमें पता है कि 10 और 20 के बीच में क्या difference है, 10 मार्क्स का gap है. बट यहाँ पे हम good और satisfactory में क्या difference है, we can't tell exactly. Another common example of this is the grading system where letters are used to grade a service or a good. You can order things so that A is higher than B. For example, अगर आपसे सर्विस में मार्क करवा रहे हैं A और B, तो देयर इज़ नो क्राइटेरिया कि आप किस तरीके से किस चीज़ के बेसिस पे A कर रहे हैं और किसके बेसिस पे B कर रहे हैं. वी ओनली नो दैट A इज़ गुड देन B. A की हायर रैंकिंग है देन B. बट विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग हाउ मच बेटर एंड A इज़ फ्रॉम B. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्क्स के बेसिस पे जब आपके एग्ज़ाम में ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो वो तो मार्क्स के बेसिस पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, जिसके 90 to 100 आए हैं उसका A+, ऐसे 80 to 90 को A. सो देयर वी नो द क्राइटेरिया, बट इस केस में वी डोंट नो द क्राइटेरिया, सो इट इज़ अ ऑर्डिनल डेटा. Now the next level is interval level. Data that is measured using the interval scale. Interval scale means it is a scale which rank the data. जो data को arrange करता है, rank देता है according to their magnitude, means according to their values. And जो values के बीच में difference होता है that is meaningful. लाइक अगर अभी टेम्परेचर 30 है और थोड़ी देर में 20 हो गया, सो देयर डिफरेंस इज 10. सो डेटा के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी मीनिंगफुल. जैसे हमने ऑर्डिनल लेवल पे देखा था, जो डिफरेंस था दैट वी कांट डिफाइन, हमें नहीं पता चलेगा, दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल. सो हेयर द डिफरेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स इज मीनिंगफुल एज वेल एज कंसिस्टेंट ऑल्सो. मीन्स कि अभी अगर 10 डिग्री डिक्रीज़ हुआ है 1 आवर में, देन अगेन नेक्स्ट आवर में 10 और डिक्रीज़ हो जाएगा, दैट विल बी 10. It is similar to ordinal level data because it has a definite ordering. So ordinal level से ये कैसे similar है? Because it also has some ordering, definite ordering, but there is a difference between two data. So अगर पूछा जाता है what is the similarity between ordinal level and interval level? So because both are having some ordering, but what is the difference between these two? Obviously in ordinal level there was no meaning of difference between two data, but here there is a absolute difference between two datas, meaningful difference between two datas. The differences between interval scale can be measured. So you can measure the difference between two interval scale data. For example, अगर 20 to 30 है, then another scale is 30 to 40. So it can be measured, their differences can be measured though the data does not have any starting point, that is zero value. सो इसमें कोई ज़ीरो वैल्यू नहीं होती. फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल सी टेम्परेचर ओनली, तो ज़ीरो टेम्परेचर मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो गया टेम्परेचर, क्योंकि नेगेटिव भी होता है, -10 भी होता है, तो मतलब ज़ीरो मतलब भी कुछ टेम्परेचर है. सो इसमें कोई ऐसा ज़ीरो नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर हम ज़ीरो बोले तो हमें समझ में आता है कि कोई भी बच्चा नहीं है वहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट नहीं है. बट इन केस हम टेम्परेचर को ज़ीरो बोले तो इट डज़ नॉट मीन कि टेम्परेचर बिल्कुल भी मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता. सो देर इज़ नो सच ज़ीरो वैल्यू इन द टेम्परेचर और इन दिस इंटरवल लेवल डेटा. टेम्परेचर स्केल्स लाइक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट आर मेजर्ड यूजिंग इंटरवल स्केल. इन बोथ टेम्परेचर मेजरमेंट 40 डिग्री इज़ इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री. तो 40 डिग्री कैसे बन रहा है? 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री के डिफरेंस से डिफरेंसेस मेक सेंस, बट 0 डिग्री डज नॉट, बिकॉज इन बोथ स्केल 0 इज़ नॉट द एब्सोल्यूट लोएस्ट टेम्परेचर. तो यहाँ पे ज़ीरो कोई ट्रू वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे ट्रू ज़ीरो वैल्यू कोई नहीं होती. टेम्परेचर लाइक -20, -30 ऑल्सो एग्जिस्ट एंड आर कोल्डर देन ज़ीरो.
Interval level data can be used in calculations. So obviously it is a quantitative data, so we can perform calculation on it, but comparison cannot be done. But हम compare नहीं कर सकते दो values को. 80 degree Celsius is not 4 times as hot as 20 degree Celsius. So हम directly ऐसे comparison नहीं कर सकते. There is no meaning to the ratio of 80 to 20. तो हम इन type के data का जो interval type का data है उनका ratio नहीं निकाल सकते exactly. So few points are given here. One category is higher than the another category. So for example, 100 degree Celsius temperature is higher than 40 degree Celsius temperature. There is a constant unit of measurement. So measurement constant unit like 40 to 50, 50 to 60. In this way we define the interval scale. 0 is just a point on scale, but there is no natural 0 point. So 0 क्या हो सकता है, स्केल हो सकता है, जैसे इंटीजर में हम लिखते हैं 0, बट फिर उसके बाद -1 -2 इस तरीके से आता रहता है. डिवीजन ऑफ टू नंबर्स डज नॉट मेक सेंस. हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट वी डोंट अप्लाई मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन दिस. स्केल और रैंक आर गुड एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज रेशियो स्केल लेवल. It is like interval scale data, it is also quantitative. If it is asked what is the difference between interval scale level and ratio scale level, so it has a 0 point. जो ratio scale level है उसमें 0 point होता है, जबकि interval scale level पे कोई 0 point नहीं होता है, और उसमें आप ratio नहीं मतलब दो values को नहीं compare कर सकते, ratio नहीं calculate कर सकते, but here in ratio scale level you can compare two values, ratios can be calculated. For example, the score of 4 multiple choice statistic final exam questions were recorded. So these were the 4 scores: 68, 80, 20 and 92, and maximum marks were 100. Grades are computer generated. So grade कैसे generate हुए? Computer से. The data can be put in order from lowest to highest. First, the data is put in ascending order: 20, 68, 80 and 92, or vice versa. The difference between data have meaning, means if you are going to subtract these two कि 20 और 68 के बीच में कितना डिफरेंस है, सो वी नो कि जिसने 20 स्कोर किया और जिसने 68 स्कोर किया तो उनमें 48 मार्क्स का डिफरेंस है. स्मॉलेस्ट स्कोर विल बी 0. 80 इज़ 4 times 20, सो वी कैन से कि 20 मार्क्स जो है वो कम है 4 times 80 से. The score of 80 is 4 times better than the score of 20. So we can add, subtract, divide and multiply the two ratio level variables. So as we discussed कि interval scale level पे we cannot perform multiplication and division. We can't say कि ये 4 times better है, but in ratio level we can perform all 4: add, subtract, divide and multiply. Example, weight of a person. It has real 0 point. So किसी का weight अगर 0 हो गया, it means that is 0 only, क्योंकि माइनस में किसी का वेट नहीं होता. दैट इज़ 0 वेट मीन्स द पर्सन हैज़ नो वेट. वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वेट एट द रियल स्केल फॉर कंपैरिजन. तो हम वेट कंपेयर भी कर सकते हैं कि इसका जो वेट है उसका 4 times है या 5 times है. नाउ लेट्स ट्राई दिस एक्टिविटी. वी हैव टू फिल द रिस्पॉन्सेज एंड देन लेवल ऑफ मेजरमेंट बताना है हमें. सो सेक्स यू कैन फिल आइदर मेल और फीमेल, एंड देन लेवल ऑफ मेजरमेंट. सो ऑब्वियसली ये जस्ट कैटेगरी है, कोई रैंकिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सो इट इज़ नॉमिनल. देन नेक्स्ट इज़ हाइट. हाइट कैन बी 0 ऑल्सो, और इसका रेशियो भी कैलकुलेट हो सकता है, सो इट इज़ रेशियो लेवल. यहाँ पे तो आपको अपनी हाइट फिल करनी है. नेक्स्ट वेट फिल करना है, एंड इस वेट भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, रेशियो कैलकुलेट भी हो सकता है, सो इट इज़ ऑल्सो रेशियो लेवल. रेट ओवरऑल हेल्थ, आपको एक्सीलेंट, गुड, एवरेज कुछ भी यहाँ पे फिल करना है. सो ये क्या है, ये इसमें ऑर्डर है. ओके, सो इट विल बी ऑर्डिनल. आप इसमें बता सकते हो कि एक्सीलेंट और पुअर में डिफरेंस है, बट उनका मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है, बट एटलीस्ट देयर इज सम ऑर्डरिंग. नेक्स्ट, पल्स रेट. सो पल्स रेट कैन बी 0 ऑल्सो, और इसका आप रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो, सो इट इज़ रेशियो. नेक्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. सो बॉडी टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी 0 और उससे कम भी हो सकता है, सो दिस विल बी इंटरवल स्केल. अभी हमने पढ़ा भी था कि टेम्परेचर इज़ अ इंटरवल वैल्यू. नेक्स्ट इज़ कंट्री ऑफ रेसिडेंस. सो कंट्री विल बी लाइक इंडिया, सो इट इज़ नॉमिनल ओनली. नाउ लेट्स डू सेकेंड एक्टिविटी. इंडिकेट वेदर द वेरिएबल इज़ ऑर्डिनल और नॉट. तो ऑर्डिनल कब होता है, जब
ऑब्वियसली क्वालिटेटिव होता है बट रैंकिंग वाला होता है, देन इट इज़ ऑर्डिनल. So first one is opinion about a new law. So this is just an opinion whether we favor or oppose. No ranking is required. So this is nominal. Next, letter grade in an English class. So you are getting letter grade like A, B, C, D. So these are grades. So these needs to be ranked. These are ordinal. स्टूडेंट रेटिंग ऑफ टीचर ऑन स्केल 1 to 10. सो यहाँ पे रेटिंग की बात हो रही है, स्टूडेंट रेटिंग ऑफ टीचर ऑन स्केल 1 to 10, बट वी डोंट नो एग्जैक्ट डिफरेंस कि 1 अगर स्टूडेंट ने रेट किया है तो किस वाइज रेट किया है, 10 किया है तो किस डिफरेंस, मतलब इनका एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता, कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है. सो अगेन इट इज़ ऑर्डिनल. अगर ये मार्क्स होते किसी बेसिस पे किया होता देन इट वुड बी इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, बट यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंस बिटवीन 1 to 10, सो इट इज़ ऑर्डिनल. हाउएवर अगर आप इसमें इसका सोल्यूशन देखेंगे टीचर्स हैंडबुक में तो थोड़ा बहुत आपको सोल्यूशन अलग दिखेगा, क्योंकि कभी कभी उसमें रॉन्ग भी प्रिंट होता है. यू ऑल्सो सॉल्व इट वंस बाय putting the logic properly, by understanding the topics well, and then just see what are the correct answers. This much for this video. In next video we will discuss statistical analysis of data. If you have understood this video well, then like करिएगा, comment करके बताइएगा, और अगर कोई doubt है then also you can tell in comment box, and please subscribe the channel, and thanks for watching this video.